Hello, welcome back to our platform. In this lecture we will study orthonormal basis. जिस तरीके से हमने वेक्टर स्पेस को पढ़ा और उसके बाद जब हमने बेसिस को पढ़ा, सपोज बीटा इज बेसिस फॉर वी, तो इस बीटा से हम काफ़ी इंफॉर्मेशन इस वेक्टर स्पेस के बारे में पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन एक्सप्रेस एवरी एलिमेंट ऑफ वी as a linear combination of element of beta uniquely. Okay, the uniqueness is provided by this basis. That was the first concept. Then this beta is the largest Li set in V. That means अगर beta में suppose 5 element है तो we can say 6 element वाला 7 element or any set which containing number of elements greater than 5 वो हमेशा एक LD set होगा. So we can conclude about Li and LD. Then the spanning set, that is the smallest spanning set. हम V के हर एक एलिमेंट को इस बीटा से बीटा की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और वो कॉम्बिनेशन यूनिक है. और इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट वन. That means if this is beta containing 5 element, then a set containing 6 element can also represent this V. The set containing 7 element can also represent this V. So this is about this beta. Now, whenever we have a vector space, we can talk about a linear transformation. Okay. Suppose in some case we have V and we have T and we want to determine the definition of this T. So what we do यूजुअली कि हम बीटा के हर एक एलिमेंट के लिए टी की इमेज आइडेंटिफाई करते हैं. सपोज नाउ इन दैट केस दिस बीटा 1 सपोज कंटेनिंग 2 एलिमेंट. Okay, suppose x1 and x2, and you know the image t of x1 and t of x2, you know this. Okay, then we can determine this t on each element of v. ओके, वी नो कि हर एक एलिमेंट v का x1 और x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है. सो द मोमेंट यू हैव सम v दैट is a1 x1 plus a2 x2, then you can always represent this t of v. That means image of this v, t image of this v is a1 time t of x1 and plus a2 time t of x2. So this is how you can determine t image of every vector of v if you know the t image of the element of this basis beta. तो इस तरीके से बीटा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वेक्टर स्पेस में. ठीक है, और वी कैन से दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर दी वेक्टर स्पेस वी. अभी हमने वी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और हम आ चुके हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पर. ओके, तो जिस तरीके से बीटा जिस तरीके से हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस इस वी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है, तो क्या अगर हम एक W इनर प्रोडक्ट लें तो इस W के लिए किस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे जो इस बीटा जैसा रोल इस W के लिए प्ले करेंगे. ओके, सो व्हेन वी हैव वेक्टर स्पेस, देन जो रोल ऑर्डर्ड बेसिस प्ले कर रहे हैं वही इनर प्रोडक्ट स्पेस में ऑर्थो नॉर्मल बेसिस प्ले करते हैं. ओके, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस. ओके, सो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की हेल्प से वी कैन डिटरमाइन various properties of this inner product. Okay, like we can identify the T image, we can identify the LILD set, we can identify the spanning set, etc. Okay, so this is the motivation to study orthonormal basis. Okay, so as a conclusion we can say जो रोल ऑर्डर्ड बेसिस किसी वेक्टर स्पेस में प्ले करते हैं वही रोल ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इनर प्रोडक्ट स्पेस में प्ले करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. ओके, सो लेट मी राइट द definition and this definition defines orthonormal basis. नॉर्मल बेसिस. ओके, हमने प्रीवियस लेक्चर में
ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स पढ़े थे किसी सेट में, और फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। ऐसे सेट एस जो जैसे सपोज हमारे पास है x1 x2 एंड सो ऑन xn, इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट है। अगर हर एक पेयर, चाहे हम कोई सा भी पेयर लें, वो आपस में ऑर्थोगोनल है और हर एक का नॉर्म या लेंथ 1 है, तो हम इस सेट को ऑर्थो नॉर्मल सेट बोलते हैं, ओके। अब वही बात है कि अगर कोई सेट ऑर्डर्ड बेसिस है और वो ऑर्थोनॉर्मल सेट भी है, तो हम उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोल देंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन, and for to define this we need a vector space. So let V be a vector space, vector space, a subset of V is an orthonormal basis for V if it is an ordered basis, that is orthonormal as well, okay. So this is the definition of orthonormal basis. Now we will discuss the example that will clarify this topic. So let us move for the example 1. Example 1, and this says let Fn be the vector space then the set beta, that is equals to E1, E2 and so on, En, is an orthonormal basis for Fn, okay. And we know this thing is true as, so let me write, since if we multiply Ei Ej, then this is equal to 1 if I is equals to j and 0 when I is not equals to j, right? इसका मतलब this beta is an orthonormal set, and we know this is the standard basis which is ordered as well, okay. So this beta is an ordered, this is an orthonormal basis, okay. So you can say, so beta is an orthonormal basis for Fn. Now come to the next example. Example 2, and it says let beta is equals to 1 by root 5 and 2 by root 5, okay, comma, we have 2 by root 5 and then we must have minus 1 root 5 is a subset of r square, okay. Then beta is an orthonormal basis for r square, okay. We can see simply कि ये किस तरीके से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। सो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनलिटी चेक करते हैं। सो कोई भी आप इनमें से एलिमेंट लो, वी हैव दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, ओके। सो यू कैन राइट लेट x1 इज इक्वल्स टू 1 by root 5 and 2 by root 5, okay. And x1 x2 is equals to 2 by root 5 comma minus 1 by root 5, okay. Then
What about the inner product of x1 and x2? So just multiply each element by the component wise multiplication. So we will have the resultant element will be that will be real number. So it will be 2 by 5. This is 2 by 5. Then add this into 2 by, this is minus 2 by 5. Okay, minus 2 by 5. So this is equals to 0. So you can say x1 and x2 are orthogonal. So x1 and x2 are orthogonal वेक्टर्स क्योंकि इनका इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट x1 with x1? That is the norm, or you can define this as x1 square. Okay, so this is equals to, just multiply x1 with the x1 only and then add it. Okay, so you can say we will have 1 over 5 plus 2 over 2 into 2, that is 5. 4 into 4 over 5, so it will be equals to 5 over 5, and that is equals to 1. And what about norm of x2 square? That is the inner product x2 with x2, and it is equals to again 2 5 4 over 5 plus 1 over 5. So this is equals to 5 over 5, which is equals to 1. Hence you can say, so x1 and x2 are unit vectors. Okay, thus beta is an orthonormal set, or you can write subset of R square. Now if this is Li, क्योंकि ये दो एलिमेंट है और आर स्क्वायर का डायमेंशन भी 2 है, तो अगर ये Li हो गया तो उस केस में दिस विल बी an ordered basis as well. So we can conclude in that this is an orthonormal basis for R square. Okay, now further for basis, let A1 and A2 are in R such that you are writing that A1 time x1 plus A2 टाइम x2 इज इक्वल टू 0, और ये Li है, इसके लिए हमें A1 और A2 को 0 प्रूफ करना है. सो A1 टाइम 1 बाई रूट 5 कोमा 2 बाई रूट 5 देन प्लस A2 2 बाई रूट 5 कोमा माइनस 1 बाई रूट 5 equals to 0. This implies if you multiply A1 and A2 then add this one. Okay, so you will have A1 root 5 plus 2A2 root 5 will be equals to, and let me write this 0 as 0 comma 0. Okay, this is the 0 element in R square, and that will be equals to 0. And the second equation will be A1 time 2. Okay, so it will be 2 A1 by root 5, and it is going to be added in this one, and this will be minus A2 by root 5, and that is equals to 0, the second component. Okay, now if you see, if you multiply the first equation by 2 and then subtract from the first one, and then subtract 1 from 2, then you will have A1 will be disappear, and on that time you will have 4A2 over root 5 minus A2, and that minus will be plus, and plus A2 upon root 5 equals to 0, and ultimately you will have A2 and A1 equals to, this implies A2 equals to A1 equals to 0. And thus you can say, so beta is Li, and hence an ordered basis for R square. Okay, so you can say thus beta is an orthonormal
orthonormal basis for R square. Now come to the a theorem which is very important, or you can say this will be the foundational work for our next lecture. So let me write the statement of this theorem. Theorem 6.3. This theorem says let V be an inner product space and a set S is equals to V1, V2 and so on Vk. Okay. Be an orthogonal set. ठीक है, orthogonal subset of V consisting of non-zero vector only, non-zero vectors. Now if some y is in span of S, we are not saying this S is an ordered basis of V. ठीक है, so y is in span of S, then we can always express this y is equal to summation running from I1 to k. Then we have the inner product y with vi and over the norm of vi square time vi. ओके, सो दिस इज, यू कैन सी अगर हम इसको कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करें, सो यू कैन से वी आर राइटिंग वाई एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस where the coefficient are of specific type. Okay, so this